Hello students, today our topic of discussion is Bohr's atomic model or Bohr's atomic theory. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि रदरफोर्ड्स atomic model has certain demerits or defects, like it fails to explain the stability of atoms, it fails to explain hydrogen spectrum, it fails to explain the cause of chemical combination, why do atoms combine to form molecules. So in order to overcome the drawbacks or defects of Rutherford's atomic model, a Dutch physicist Niels Bohr proposed an atomic model which gives an almost correct picture of an atom. Now, this theory is based on Planck's quantum theory and quantization of energy. Though these are not there in details in your syllabus, but let me explain a little bit about this. Planck's quantum theory क्या है? According to Planck's quantum theory, whenever a body emits or absorbs energy, it do so in the form of small packets and discontinuously. जैसे कि suppose here is a bulb and light, it is a form of energy. So the light emitted from this bulb discontinuously in the form of small packets, and this small packet of energy is called quantum. In case of light it is called photon. So कभी भी कोई भी सब्सटेंस अगर लाइट या फिर कोई भी फॉर्म का एनर्जी एमिट करता है तो डिसकंटिन्यूसली एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. Those packets are called quantum. In case of light it is called photon. Similarly, quantization of energy means energy is quantized. A fixed amount of energy is released at a particular time, at a given time. For example, you can see this digital watch. It displays 50 seconds here, after that 51 seconds, then 52 seconds, but you won't get the figures like 1.59 second, 2.39, so it should not be fractional. That means what? At a time, one photon or a multiple number of that photons may come out of the source. So based on these two concepts, Bohr proposed the atomic model that is called Bohr's atomic model. So let us come to the postulates. First postulate is every atom has a heavy positively charged body at the center and is called nucleus, and electrons revolve around the nucleus in certain definite permitted circular paths which are called cells, orbits or stationary states. Stationary states means fixed state or fixed path. These cells, the fixed paths, they are designated as K, L, M, N, etc. You can see here, this is the picture of an atom as per Bohr's atomic model. The heavy positively charged body is at the center, that is called nucleus, around which there are certain definite permitted circular paths which are called cells, orbits or stationary states where the electrons revolve. So here only 1, 2, 3, 4 cells are there. Some students they get confused from their 10th standard, 10th standard में वो सिर्फ KLMN तक उनको पता है, तो वो क्या कहते हैं कि 4 ही सेल है टोटल, but actually there are infinite numbers of cells. The next postulate, each cell is associated with a definite quantity of energy, hence the cells are also called energy levels. So हर सेल का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए ये सेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, किस सेल का एनर्जी कितना है? इसके लिए एक फॉर्मूला है. द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर Me4 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर H स्क्वायर. M, it is the mass of electron, E stands for charge of electron, Z is atomic number, N is number of shell or it is also called principal quantum number, H is Planck's constant. See here, mass of electron, charge on electron, atomic number, number of shell or principal quantum number, this is Planck's constant. So you can see here 2 is a constant quantity,
pi is also constant quantity 22/7, m it is known, charge on electron it is also known 1.602 into 10 to the minus 19 coulomb, z it is fixed, for hydrogen it is 1, for helium 2, for lithium 3 and so on, n is the number of shell and h is also a constant, its value 6.626 into 10 to the minus 34 joule second. So substituting these values we get En equal to minus 1312 by n square kilojoule for mole for hydrogen atom. That means Z equal to 1 if we put Z equal to 1 here. Now if you substitute for n number of shell, for k cell the energy content is, for k cell n is equal to 1, the first cell principal quantum number is 1, so minus 1312 by 1 square we are getting minus 1312. Similarly we can calculate the energy content of other cells like your L cell. So for L cell n equal to 2 we have to put 2 here in place of n, so हम लोग को मिला ये वैल्यू. अब सिमिलरली m सेल का वैल्यू ये आ गया. अब ये जो एनर्जी है देखो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. दिस एनर्जी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, हियर इज माइनस साइन. So energy minus 1312 and minus 328 minus 147.8. That means the energy content increases as we move away from the nucleus. That means K सेल का एनर्जी सबसे कम है, फिर इसका ऊपर वाला L सेल का ज़्यादा है, फिर M सेल का ज़्यादा है. वैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एनर्जी कंटेंट बढ़ता जाएगा. So the energy increases as you move away from the nucleus. इसका एनर्जी सबसे कम है, फिर सेकंड सेल का, फिर थर्ड सेल का एनर्जी है. अब ये जो गैप है, एनर्जी जो गैप है ये सेम नहीं है. दैट मीन्स द एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वल स्पेस्ड. जैसे कि तुम लोग लैडर देखे होगे, ये जो लैडर है सारे स्टेप सेम है इसका, लेकिन एनर्जी लेवल सारे सेम नहीं होते हैं. द एनर्जी गैप डिक्रीजेस. अगर ये के सेल है, इसका एनर्जी हो गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर E2 का वैल्यू माइनस 3.4. ये जो दोनों के अंदर जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है. फिर जो सेल उसके करीब आ जाता है, फिर सेल करीब आ जाता है, वैसे ही इनफाइनाइट डिस्टेंस में सारे सेल्स जो है मर्ज कर गया. सो द एनर्जी गैप डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द nucleus. The next postulate, though a large number of concentric circular paths are possible around the nucleus, but electrons do not revolve in all those circular paths. They revolve only in those circular paths for which the angular momentum value is a whole number multiple of s by 2 pi. That means angular momentum value mvr, it should be whole number multiple of h by 2 pi, where n is the whole number 1, 2, 3, 4 etc. So अगर यहाँ मास, वेलोसिटी और ये जो h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, पाई का वैल्यू, 2 का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे यहाँ, तो r जो रेडियस है वो निकल के आता है. सो मान लो कि ये न्यूक्लियस है. अब मैंने क्या किया, इसको चारों तरफ एक तो सर्कुलर पाथ बना दिया, और मैंने और एक सर्कुलर पाथ बना दिया यहाँ, और एक सर्कुलर पाथ बना दिया. लेकिन कुछ भी सर्कुलर पाथ बना दो, ये सारे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे. कौन से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे? जिस किसी भी सर्कुलर पाथ का एंगुलर मोमेंटम वैल्यू होल नंबर मल्टीपल h बाई 2 पाई होगा, उसमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे. सो अगर ये पाथ है, ये अनदर पाथ है, इसके अंदर कुछ भी पाथ कर लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे. नेक्स्ट पोस्टुलेट इट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. When external source of energy is supplied to an atom, then the electrons absorb energy and jump to the higher excited state. So suppose I have supplied some energy. How much? E2 minus E1 amount. अगर इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, ये छोटा एनर्जी, कम एनर्जी है, ये ज़्यादा एनर्जी है.
इन दोनों का जो डिफरेंस एनर्जी अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इसके बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एक्साइटेड अगर हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल इन द एक्साइटेड स्टेट, दे अगेन जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अब क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और फिर से ये ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। और ये जो एनर्जी अब निकल के आया है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। So the energy released or emitted by the electron while jumping from excited state to ground state appears in the form of light, and that light is nothing but the spectral lines, which could not be explained by Rutherford. Rather, this could easily explained by Bohr's atomic model. अब देखो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट स्टेट को आता है, मतलब के सेल फर्स्ट सेल को आता है, तो ये जो एनर्जी सीरीज ऑफ एनर्जी निकल के आएंगे इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। अगर हायर सेल से सेकेंड सेल को एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका कहेंगे बाल्मर सीरीज। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर सेल्स टू द थर्ड सेल इट इज कॉल्ड पासन सीरीज। एंड सिमिलरली वी आर गेटिंग हियर ब्रैकेट सीरीज, Wifon series, and another one has already been introduced, that is Humphrey series. So the next part as per your syllabus is Bohr-Bury scheme. Now Bohr-Bury scheme, it explains how the electrons are arranged in a different cells of an atom. So there are 4 postulates. First one, a shell can hold a maximum of 2n square number of electrons. So cell, whatever may be the cell, it contains a maximum of 2n square number of electrons, where n is number of shell. See here, K, L, M, N shell, n equal to 1 here, 2, 3 and 4. Let me fill up the table. So 1, 2, 3 and 4, maximum number of electrons 2n square. So K shell, n equal to 1. So 2 into n square means 1 square is 1. So it is equal to 2. Similarly L cell, 2 into 2 square 4, 8. M shell, 2 into 3 square 9, total equal to 18. Similarly for N cell it is 32. That means the first cell, that is K cell, it can contain a maximum of 2 electrons. The second L cell, it can contain a maximum of 8 electrons. Similarly, third and fourth cell, they can contain a maximum of 18 and 32 electrons respectively, and so on. The second postulate, the valence cell or the outermost cell cannot hold more than 8 electrons. So it can hold a maximum of 8 electrons, not more than that. Third postulate, the penultimate cell cannot contain more than 18 electrons. It has a maximum capacity of 18 electrons. Penultimate cell matlab the cell just before the outermost shell. So last cell का previous cell को आप लोग कहते हैं penultimate cell. वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह पाएगा. And the last postulate, a higher cell may start filling even before the inner cells are completely filled. ऐसा कभी कभार होता है कि नीचे वाला जो सेल है वो फिलअप कंप्लीट नहीं हुआ होगा, फिर भी हायर सेल को इलेक्ट्रॉन जा सकता है. तो चलो देखते हैं. आइटम, these are the cells having capacities 2, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया था. इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 8 है, 18 है और इसका 32 है. तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया के शेल पे. हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सो हम लोग यहाँ 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा
और एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल एल को चलाएगा। इसी तरह बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन है इसका, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, दिस विल कंटिन्यू अप टू नियन एटॉमिक नंबर 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब सोडियम की बारी आता है तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, यहाँ तो 2 इसका कैपेसिटी 2 है और यहाँ हम लोग 9 नहीं लिख सकते क्योंकि एल सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 8 है, तो 8 हो गया और बाकी जो इलेक्ट्रॉन एक तो बच गया हो जाएगा एम सेल को। इसी तरह ये फिलअप होता जाएगा। लेकिन और एक बात यहाँ गौर करने वाला, जो कि मैंने 4 नंबर पॉइंट बताया था, पेनुल्टीमेट शेल 4 नंबर पॉइंट मैंने जो बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि लोअर सेल कंप्लीट नहीं होगा और हायर सेल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यहाँ देखो आर्गन एटॉमिक नंबर 18, यहाँ तो 2 इसका कैपेसिटी हो गया, 2 रह गया, इसका कैपेसिटी 8 था रह गया यहाँ, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है कितना है 18 है, 8 है। अब यहाँ 19 जब पोटेशियम हम लोग आते हैं, 2 तो ठीक है 8 तो ठीक है, इसका कैपेसिटी कितना है एम सेल का 18 है, लेकिन यहाँ 8 है और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आया है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर सेल कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है, जहाँ की इसका कैपेसिटी 18 है, फिर भी इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है। So in this way we can write the electronic configurations of atoms as per their shell.